Yep, you're watching cricket.com Fantasy Center. Two big games coming up. Of course, qualification on the line for every team now. So West Indies are going to host South Africa tomorrow morning. But uske pehle, you will have USA taking on England. A must-win game for England to just ensure that they are through to the qualification scenario. So that all of that is sorted. तो बात करेंगे आपके साथ स्मॉली ग्रैंडली कैप्टनसी सब कुछ बात करेंगे तो अंत तक जुड़े रहेगा एंड यप लेट्स वेस्ट नो टाइम इट इज शो टाइम लेट्स गेट क्रैकिंग लॉट्स टू टॉक अबाउट हेलो स्वागत है आपका cricket.com फैंटेसी सेंटर में यप वी आर टॉकिंग अबाउट फैंटेसी एंड ऑफ कोर्स फैंटेसी की बात कर रहे हैं तो टू साइड्स ऑफ फैंटेसी बोथ ऑफ द राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑप्शंस दैट यू कैन पिक एंड चूज तो करना आपको यह है ऐप डाउनलोड करना है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड यू हैव टू ऑप्शंस 7:4 कॉम्बिनेशन बनाना है बट अगर आपको टॉस का स्ट्रेस नहीं चाहिए 11 का टेंशन नहीं चाहिए जॉइन द प्रो मोड 1 आप एट द स्टार्ट ऑफ द गेम बाकी इफ यू आर कॉन्फिडेंट 11 के बाद पिच विच सब देखने के बाद भी इफ यू फील नहीं आई कैन क्रैक इट प्ले द क्लासिक फैंटेसी जो भी खेलना है प्ले स्मार्टली डिस्क्लेमर आपको नीचे दिख रहा है कि दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड कैन बी एडिक्टिव सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क ये तो हो गई बात डिस्क्लेमर की तो ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे ऐसा आपको दिखेगा लेफ्ट में आपको दिखेंगे फिक्चर सारे गेम्स लाइव है वर्ल्ड कप वाले यू कैन चेक आउट इन दैट सेपरेट सेक्शन दैट्स देयर क्लिक ऑन दैट गेम फिर आपके पास मेन्यू खुल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द होम पेज ऑफ दैट गेम कि कौन सा मोड आपको खेलना है क्लासिक मोड खेलना है या फिर प्रो मोड खेलना है तो जस्ट पिक द मोड मेक अ टीम एंड जॉइन द कॉन्टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस बाकी खुद से होमवर्क करना है तो रिसर्च आपको दिख रहा है नीचे होम माय मैचेस रिसर्च पे क्लिक करो लिस्ट खुल जाएगी मैचेस की वहां पे जिस मैच के लिए रिसर्च करना है वो क्लिक करो तो आपके लिए रिसर्च सेंटर खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा सब कुछ और यहाँ पे यूएसए इज हैविंग 24% चांस व्हिच इज समथिंग वी डोंट माइंड ऑलवेज अ sucker for the underdog but England overwhelming favorites है but उसके बारे में बाद में बात करेंगे for now you will get all of that in terms of CricCrazyNIKS insights you will get team data venue data CricCrazyNIKS की टीम्स जिसके बारे में हम वीडियो में भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स प्लेयर स्टैट्स जहाँ पे आपको हेड टू हेड मैचअप फॉर्म सब कुछ मिल जाएगा इस गेम में आपको ना मिले क्योंकि दो टीम्स पहले नहीं खेली बट आगे in terms of future games you will definitely see them there whenever it is possible so download the app check it out now बाकी यूएस इंग्लैंड की बात करते हैं बारबाडोस में खेला जाएगा ये मैच तो कैसी रही है मैचेस बारबाडोस में टॉस एग्नोस्टिक एट टाइम्स प्योरली बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आर देयर व्हिच आर वेरीड इन डे गेम्स एंड नाइट गेम्स तो बहुत फर्क है डे गेम और नाइट गेम की कंडीशंस में तो व्हेन यू आर मेकिंग योर टीम आई वुड से वेट फॉर द कंडीशंस एक बार कंडीशंस देखो जो दिन के मैचेस रहे हैं वहां पे स्कोर्स कम बने हैं जो मैच हमने अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला देखा गॉट अ विन फॉर अफगानिस्तान देयर लो स्कोरिंग था वो तो दिन और रात में चेंजेस है कभी कभी सेम कभी कभी अलग तो ओवरऑल रन्स बने हैं बारबाडोस में बट जो गेम इंग्लैंड खेली थी यहाँ पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट आल्सो हैड समथिंग फॉर द बॉलर्स so pacers again as you can see on your screen have bowled majority of the overs and they've taken a lot of wickets as well rightly too so बैलेंस टीम बना के चलेंगे बट इंग्लैंड खेल रही है और बारिश की बात ना करें तो थोड़े चांसेस है रेन के और इसीलिए मैं कहता हूँ क्लोजर टू द गेम इन्वेस्ट करो व्हेन यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कितने ओवर का मैच क्या है क्या नहीं क्योंकि व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज जैसे हमने कल बात कर दी इन द वेस्ट इंडीज गेम सारे स्पेशलिस्ट को हमने बैक किया बट विकेट लेके गए रसल और चेस सो यू हैव टू बी रियली वेरी श्योर ऑफ योर विजुअलाइजेशन 7:4 में योर स्किल विल कम इनटू प्ले इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर रीडिंग दोस कंडीशंस सो that is that changes I don't expect any from USA unless somebody is injured or Munang agar miraculously fit ho gaye so that is the only change that can happen there England would they be tempted to play Jordan for Wood yeah last game mein Wood almost as an afterthought tha wasn't used at all and that is what makes England games tricky क्योंकि बहुत विकल्प है बॉलिंग के और कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करेंगे जैसे हमने अफगानिस्तान गेम में भी देखा गुलबुद्दीन नाइब out of nowhere proper out of syllabus bowler aa gaya Afghanistan ke liye and he got so much help from the deck so always keep that window open for you and of course once you have the 11 it is easier to make that call but still try and go with people who are more likely to play a key role and bowl 4 overs तो बात कर लेंगे उसके बारे में अल्टीमेट लेवल में बट
some data to discuss for a couple of key players. So Josh Butler in this World Cup hasn't quite been himself. Yes, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी आई थी, but उसके बाद it's been a stuttering kind of a time for him. Strike rate 85, 140, not something that you associate with him. He'll want to go back to the Barbados way and bat at a good rate. So let's see if Saurabh Netravalkar gives him that freedom, क्योंकि रूबल ट्रम्पल में तो उन्होंने तो आउट कर लिया था, तो देखते हैं आगे कैसे करते हैं बटलर साहब। बाकी जॉनी बेस्टो जब भी आते हैं लेफ्ट आर्म पेस की लेफ्ट आर्म स्पिन की बात करते हैं, पिछले गेम में महाराज को आउट हुए थे, कॉट एट पॉइंट। इस गेम में 2 हैं, नॉस्टोस केंजी की और हरमीत सिंह। एंड आई एम वेरी वेरी टेम्प्टेड, एंड अगेन यू वुड एक्चुअली बी होपिंग कि सौरभ के साथ you could have Nostos Kenji, just opening the bowling, keeping it tight versus Salt, Butler, Besto. तो वहां पे मोइन अली की वैल्यू ऐड बढ़ जाती है, क्योंकि you might see him being promoted at 3 just to counter that if they lose an early wicket. So lot of good things to look out for. और डेटा तो आपके सामने है, 8 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट नो लेफ्ट आर्म, एंड एवरेज 26 इज फाइन, बट बॉल्स पर बाउंड्री, दैट्स वेयर द थिंग्स लाइज फॉर यू कि अटैक करने का कोशिश तो करेंगे, 143 का स्ट्राइक रेट से दिख रहा है, but boundaries, so that is balls per dismissal. So 18 बॉल में 1 विकेट जाती है, so that is something that you can definitely keep in mind. ये तो हो गई बात बटलर और बेस्टो की। हरमीत सिंह लेफ्ट आर्म, स्लो लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हैं, पिछले गेम में भी 1 विकेट ही फाउंड वे टू टेक 1 विकेट। you'd hope there is enough for हरमीत to work around with, तो बैटिंग से वैल्यू तो है आपके पास, तो बॉलिंग से भी ही शुड बॉल इनफ नंबर ऑफ ओवर्स। और अब देखो ज्यादा जो इंडियन की बैटिंग है, जो लोअर ऑर्डर है, ब्रूक is the only guy who scored runs in terms of that order. Bairstow has had 1 good knock. Sam hasn't gotten a lot of time to bat, and so is Liam Livingstone. So अगर ऊपर से लेफ्टीज ऊपर लेफ्टी नहीं आते, तो राइटीज को ज्यादा बॉलिंग करने का मौका मिलेगा हरमीत को। तो जो काम चेस करके गया अगेंस्ट यूएसए, होपफुली हरमीत कर लेंगे, तो एन ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई आउट। तो अल्टीमेट 11 डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो वाइज में भी मोस्ट लाइकली आपके 4 जो यूएस के प्लेयर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, जिसमें से 2 या 3 तो कंफर्म है, विच इज एंड्रस गाउस, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, हरमीत सिंह, वी डिस्कस्ड व्हाई, और सौरभ नेत्रावलकर हैड अ टफ ग्लास गेम, बट स्टिल यू वुड वांट टू बैक हिम। अब आपको सिनेरियो चाहिए तो हरमीत और सौरभ के साथ मैं दोनों केस में रखूं। एंड्रयू गॉस, देखो गॉस के साथ ये है कि बेस्ट प्लेयर है उनका, टेक्निकली साउंड है, लंबी पारी खेल सकता है, तो आप बैक करना चाहोगे, बट डेटा सेज ही इज बेटर इन चेजेस। तो अगर पहले आपको 4 प्लेयर तो लेने, तो अगर आपको पहले बॉलिंग करते हुए यू वांट टू टेक अली खान, यू कैन डू दैट। और अगर पहले बैटिंग कर रही है और आपको लोअर मिडिल ऑर्डर को लेना है, तो वो भी आप कर सकते हो, कंप्लीटली योर कॉल। इवेंचुअली यू शुड जस्ट बैक योर विजुअलाइजेशन। तो जो चौथा ऑप्शन है वो ओपन है आपके लिए, आप वहां पे जोन्स को ले सकते हो, नीतीश कुमार को ले सकते हो, यू कैन गो विद अनदर ऑलराउंडर, वेदर इट इज टेलर और इट इज शैडली, और यू कैन गो विद अली खान और नौस्तुश केंजी फॉर दैट मैटर। तो अगर नौस्तुश केंजी को लेते हो, तो फिर जो 4 राइटीज आपको दिख रहे हैं इस टीम में, इन टर्म्स ऑफ बटलर, सॉल्ट, ब्रूक एंड बेस्टो, you'd expect a couple of them to fail, but they could fail after a score as well. So again, as I keep saying, अपनी विजुअलाइजेशन को बैक करके चलो, इस गेम में 7-4 कॉम्बिनेशन ही आपको दिखेगा, बट अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, यू विल बी इन द गेम अ लॉट मोर, बिकॉज फिर द 4 यूएस प्लेयर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बटलर, सॉल्ट ऑफकोर्स सभी के टीम में आपको दिखेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी दिखेंगे इन बोथ सिनेरियोस। बैटिंग सेक्शन, जोन्स की हमने बात करी, हैड 1 ग्रेट नॉक, बट उसके बाद हैजंट क्वाइट फायर्ड। पिछले गेम में भी चेस हॉक करने गए, बोल्ड हो गए, तो बॉलिंग तो ऑप्शंस इनफ है इंग्लैंड के पास। कैन जोन्स पुट अप अ फाइट अगेंस्ट सम ऑफ हिज टीममेट्स इन जोफ्रा एंड अदर्स, तो देखेंगे आगे। बाकी फ्रॉम इंग्लैंड एंड तो हमने ब्रूक और बेस्टो दोनों को लिया है। चेस कर रही है इंग्लैंड, तो शायद आप ब्रूक को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाओगे, विच इज अगेन नॉट एन अनफेयर थिंग टू डू। टर्म कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। तो वो तो हो गई बात बैटिंग सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन से एक ही प्लेयर लिया है, कोरे एंडरसन को हर गेम में ले लेके पछता रहे हैं। might be the game where he finally turns up, but you expect England space to take care of him. वुड अगर खेलते हैं, जॉर्डन भी अगर खेलते हैं, तो यू एक्सपेक्ट जॉर्डन, आर्चर, और जैसे कोरे की बैटिंग रही है, hasn't inspired that much confidence. तो if you trust him, please go ahead and pick him. मिलिंद साहब है यहाँ पे for you to pick, शैडली है, टेलर भी है। टेलर is a very tempting pick to be very very honest with you, but eventually gut feel call है, क्लोजर टू द गेम ले लेंगे, और लिविंगस्टन और मोइन अली। अब जब आप सोच रहे हो कि लो स्कोरिंग अगर होगा, तो फिर मोइन अली के साथ बहुत वैल्यू है। बॉलिंग वो सभी को कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी वैराइटीज
कि सिर्फ लेफ्टीज को डालने चाहिए. तो completely your call with the all-rounders. Again, not an easy game for you to pick and drop because, as I said, the distribution on overs is not in your hand. Uh, you'd expect Archer and Rashid to bowl 4-4 each, which is why I have taken them in my side. But Wood, Sam Curran, Reece Topley, and Sam Curran, if I'm not wrong, haven't got a wicket yet. It is absolutely mad to think about it, but it is what it is. So दैट इज देयर यू गो. बॉलिंग सेक्शन अली खान, जैसे हमने कहा यूएस में अगर पहले बॉलिंग करते यूएस, तो यूएस में आपके लिए वो ऑप्शन है. नेत्रावलकर है, तो नेत्रावलकर तो मोस्टली आपको टीम में दिखेंगे सबके. बाकी आर्चर, रशीद, वुड, टॉपली, योर कॉल. सॉर्टेड. तो स्मॉली कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेंगे? बटलर एंड सॉल्ट. वैल्यू ऑब्वियस, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद. अगेन पीपल हु विल बोल प्ले की रोल्स, पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बोल 4 ओवर्स. कंप्लीटली फेयर कॉल. यूएसए से मैं एक ही प्लेयर के साथ जा रहा हूँ. शायद थोड़ा बायस हो जाएगा वहां पे, पर हरमीत सिंह आई थिंक हैज वैल्यू, स्पेशली व्हेन इज बॉलिंग सेकंड. तो बैट फर्स्ट करते हुए कुछ रन्स और बाद में बॉलिंग, तो आई वुड वांट टू टेक अ रिस्क विद हिम. बाकी आपके पास बहुत विकल्प है टू ट्राई. अगेन कैप्टन में नहीं कहूंगा, बट वाइस कैप्टन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में. ऐसे आपको उसके पास जाओ, और यहाँ पे भी आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की टीम में हरमीत साहब दिख रहे हैं, जोफ्रा आर्चर. सेफ ऑप्शंस तो आर अगेन बटलर, नेत्रावलकर एंड बटलर. तो एज आई कीप सेइंग, डू नॉट ऑलवेज जस्ट गो बाय द कैप्टन वाइस कैप्टन. पूरी टीम चेक कर लो क्या कॉम्बिनेशन बना के आपको रेफर कर रहा है डेटा, एंड देन यू इफ यू फील कि हाँ ये कॉम्बिनेशन आई एग्री विद दिस विजुअलाइजेशन, देन यू कैन गो अहेड एंड पिक दैट कॉम्बिनेशन. सो high risk also has Milind and Harmeet. So enough options for you to try. As I said, eventually just back your visualization and have a good game. Grand League options discuss करेंगे पहले. Big tip quite straightforward actually. ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर बॉलिंग नहीं मिली तो क्या करेंगे. तो आदिल रशीद is 2 away from becoming the guy with most wickets for England in T20 World Cups. Could take 2 or 3 today and just go past Stuart Broad there. और आई मीन जॉर्डन भी कर सकते हैं खेलेगा तो, बट अभी के लिए राशिद इज मोर पिप्ड एंड यू एक्सपेक्ट राशिद, जैसे उन्होंने बॉलिंग करी है पिछले गेम में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, यू एक्सपेक्ट हिम टू बी अमंग द विकेट्स. सो होपफुली ही विल डू द जॉब फॉर यू एंड यू विल डू द जॉब फॉर योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ बैकिंग योर बेस्ट बेट्स. Other Grand League options in a chase at back Andres Gauss, Stephen Taylor, as I said, very tempting pick, and Nostos Kenzige for the right-handers, for the plethora of right-handers that are there in the England setup. Moeen Ali, again, we talked about him, could earn a promotion to just counter Nostos and Harmeet, and that is a good way. You could see Taylor bowl to Moeen Ali then, which is, again, hopefully it will happen. And Reece Topley. Most likely, I'll probably back him in the second innings. हमने पहले भी discuss किया है. Sometimes teams just play out the opening bowlers while bowling first, but while bowling second, if the pressure is there and the bowling is good enough, you can get those early wickets. Something that Navin Ulak showed us as a surprise factor against Australia. So have a good game. That is the first game for you. Now the second game, the game that will have every calculator out, because England game के बाद margins पता होंगी वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को कि क्या करना है. वर्चुअल नॉकआउट दिस विल प्लेड इन नॉर्थ साउथ एंटीगा, जहाँ पे कंडीशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट रिसेंटली दे प्लेड सीरीज व्हिच इज देयर इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो वेस्ट इंडीज हैव वन द लास्ट 4 games आउट ऑफ द लास्ट 5. हिस्टोरिकली 11-11 है, व्हिच इज ग्रेट. वर्ल्ड कप में साथ पर रीसेंट फॉर्म वेस्ट इंडीज का है, तो दिस इज एज एप्ट इन टर्म्स ऑफ अ नॉकआउट एज इट कैन गेट. एंड जस्ट हैव अ लुक एट पीपल हु हैव प्लेड द मैच. जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेस, किंग नहीं है, पर अल्जारी जोसेफ एंड क्विंटन डी कॉक. सो 3-4 of them are playing and that should make it interesting. बाकी नॉर्थ साउंड एंटीगा की बात करें तो याद रखना ये हमारे लिए अर्ली स्टार्ट है, बट फॉर देम इट्स अ नाइट गेम. Conditions overall haven't been that great, but as I'll keep saying, just give it a good look. You'll probably expect 140, 150 surfaces, and teams will probably opt to chase because they want to know the score. But teams like Afghanistan don't mind batting first. Will South Africa mind batting first? You don't know. They've found a way to close out games. I think they'll probably prefer themselves defending a score. So again, go by what you feel they will do under pressure, because it is a massive game. So under pressure, who all can come good? Changes I'm not expecting any. Yes, Kyle Mayers is linked up, but Shai Hope ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी पिछले गेम में. So I don't expect any changes from West Indies, nor do I expect from South Africa. Samshi is a tempting one, but Bartman solves a lot more problems for them. And Samshi did not look in that great a touch. But again, if the conditions are different,
you would want to pick Samshi. So he's played a lot of CPL as well. Completely your call there. Talking about people enjoying to face each other. So Quinton de Kock's most runs have come against West Indies. 12 मैच में 487 रन है, एवरेज बढ़िया है, स्ट्राइक रेट बढ़िया है, इकलौती सेंचुरी है आपको जो दिख रही है उनके सामने फॉर हिम दैट इज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. सो बैक कर सकते हो, पिछले गेम में बहुत बढ़िया लगे, सभी लोग लेके आएंगे. फैली ऑब्वियस कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल, पर थोड़े इश्यूज रहे हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिन, अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस एज वेल विच वी सॉ. टॉपली ने मिड चांस क्रिएट करने का ट्राई किया था, वेयर हिज बोल्ड ऑन द हिप्स एंड स्ट्रेट टू बैकवर्ड स्क्वायर लेग, पर डीप स्क्वायर लेग, बट वो हर बार होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो. सो लेट्स सी हाउ दे प्लान इट, बट रॉस्टन चेस कैन आल्सो कम इन वेरी वेरी अर्ली टू बोल टू हिम. और रीजा जिस स्पीड पे जा रहे हैं, could even Akil Hussain also could dismiss Quinton de Kock if there is enough pressure with the reverse sweep. So back your gut feel on that. Aiden Markram, captain, will want to step up under pressure. ज़्यादा runs नहीं बने हैं, but against West Indies in the last 5 innings, 35 not out, 38 not out, 14, 51 और 70. तो 4 बार 30 का आंकड़ा पार किया है. एंड अगेन थोड़ा पहले का डेटा है, बट अगर आपको उससे पॉजिटिव वाइब्स आती है तो प्लीज गो एड एंड पिक हिम इन योर टीम्स. Depending on the conditions, remember he also bowled an over and could bowl an over again if he wants to against West Indies. So there you go. Baaki Nicholas Pooran, this data will come as surprise to few, but Nicholas Pooran against South Africa and T20s, 0 to 9 though, 10 to 29 5 bar. Only once has he's gone past the 30 run mark, which is weird. But do you think he's taking too many risks? Well, we'll see how he plays today under pressure and what are the options that they apply against him, whether it is Rabada, whether it is Nokia, or because Keshav Maharaj se aap bowling expect nahi karte ho against him. So this is going to be a battle to look out for in terms of how Nicholas Pooran lines up South Africa in this game. So that is Nicholas Pooran, and another option that South Africa will want to be very, very sure of in terms of countering in the middle overs, because they have lost a lot of wickets in the middle overs. It is Guthikesh Moti, जो अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं. इस वर्ल्ड कप में भी 8 विकेट लिए हैं 6 मैचेस में, और इकोनॉमी रेट बढ़िया है. पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करी ज्यादा क्योंकि लेफ्टी था. समथिंग दैट आई डिडंट क्वाइट एग्री विद, बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड, एंड व्हिच इज व्हाई आई कीप सेइंग थोड़ा स्मार्ट करो कि हमें क्या चाहिए वो तो ठीक है, बट व्हाट आर द कैप्टन आल्सो लाइकली टू डू. तो वो ऑप्शन भी अपने टीम में लेके चलना, क्योंकि है काफी ज्यादा राइटीज, बट अगर क्विंटन टिक गया तो फिर ऑब्वियस बॉलिंग नहीं मिलेगी. एंड इफ दे सेंड मिलर अर्ली, इवन देन दे कुड पोटेंशियली नॉट गिव द बॉल टू Guthikesh enough. तो be very sure of it. So let's discuss the ultimate 11 then. Base team in this scenario, again, not too many changes. Probably a 10-man team that you can see. क्योंकि Pooran, Salt and Quinton, Salt बोल रहा हूँ, Pooran, Klassen and Quinton de Kock आपको सभी के टीम में देखेंगे. Pooran obviously is Quinton de Kock, we just discussed. Klassen hasn't had a great score, but if ever there is a game for him to come good in terms of the matchups and everything that West Indies are to offer, this is the game. Take care of Guthikesh Moti, and this should be a good one for him. Of course, Russell will test him out with a short ball, तो आशा करेंगे कि वो ढंग से खेलें and get South Africa good score. Batting section, Reza Hendricks, ना आप पिक करोगे ना मैं, पर अगर लगता है कि जय माता दी कर जाएंगे ऑन द बिग डे, प्लीज गो एंड पिक हिम. अभी के लिए मैंने माकरम को रखा है, बिकॉज वीव सीन हाउ ही इज डन इन द पास्ट in terms of against West Indies, so that's why he's there in the team. All-rounder section, Andrew Russell और ऑस्टिन चेस. अब मार्को यानसेन को लेके आपकी जो भी राय है, यू कैन कंप्लीटली बैक इट. शाय होप के सामने बॉलिंग करेंगे वो अलॉन्ग विद जॉनसन चार्ल्स. अगर आपको लगता है कि जल्दी विकेट लेगा तो पिक हिम. You have Keshav Maharaj as an option. I feel that South Africa will want to employ against them. So that's where I have that margin open for me to pick somebody else if I want to. In the bowling section, you have Gary Joseph, 2 key guys. You expect them to bowl majority of the overs, along with 2 options from South Africa, Rabada and Nokia, and you expect both of them to again bowl 4-4 each. अब पहले bowling करते हैं तो you can go with Batman, साउथ अफ्रीका के एंड से, और अगर पहले बॉलिंग करी है वेस्ट इंडीज तो आप ओबेद के साथ जा सकते हो, बट यू वुड एक्सपेक्ट ओबेद टू गेट अ गुड बॉल. सो आई थिंक देयर इज अ लैग फॉर सम रीजन, होपफुली नॉट टू मच, एंड यू कैन हियर मी आउट क्लियरली. तो स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन अगर देखेंगे इस गेम के लिए,
तो निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, fairly straightforward, no doubt there. बैटिंग सेक्शन से मुझे किसी पे भरोसा नहीं, आपको है, गुड लक. ऑलराउंडर सेक्शन रसल एंड चेस, अगेन यानसेन का ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है कि कब आप उसको बैक कर सकते हो. सो दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई. शेफर्ड खेल नहीं रहे. With the ball, you have Rabada and Joseph. Most people will come with such combination. Russell will be the default captain for many, which is again fair and fine. तो इसकी मैच की क्रिकेट की टीम्स आपको मिल जाएंगी ऐप पे. डाउनलोड कर लो ऐप, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. What do we have left? Do we have something left? Yeah, we do. The big tip. David Miller against Spain is something that has gotten better with time. But now you see in this very year, it hasn't quite been that rosy. Average of 18, strike rate of 117, 12 dismissals for him in 23 innings. So 50 more, almost 50% of times is getting out to spin. और उसमें किसको आउट हो रहे हैं? तो ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन. लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन का टेंशन तो नहीं है, बट ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन ऑप्शंस है. David Miller, big match player, will he step up like he did against Australia in the semi-final? Let's see. And if you have gut feel on him, then do back him in your teams for the Grand League. उनके अलावा got stuck. Finally, the mandatory lag is here, but yeah, this is back. So Klassen and Shai Hope from the wicket-keeping section for you to try out. Shai Hope played a great knock in the last game. Completely your call. As I said, has to take care of Mar, has to take care of Jansen. He does that. You can back him. You have a Hendricks. कभी-कभी नहीं चलते, but batting first. Far more positive options. They went away. Again, players like him, all they need is one knock on that big day, and if it comes off for them, then there is no stopping them. So Johnson Charles is an option for you to try, along with David Miller from the batting section, which you already know about. इसके साथ ऑलराउंडर सेक्शन से केशव महाराज, एज आई सेड, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि शाय होप, जॉनसन चार्ल्स, ऑल दीज गाइज विल गेट आउट टू केशव महाराज, देन केशव महाराज इज योर ऑप्शन. Again, surface becomes very, very critical for you to counter that. In the bowling section, Grand League options to Nokia, O'Neill Batman. पिछले game में had a horrible last over, but that can happen with anyone. But bowling first, especially, I would want to pick him. Bowling second, अगर आपको लगता है कि मैच एंड तक जाएगी and then he'll be key part of that setup, so then you can go to O'Neill Batman as a potential option there. इसके अलावा, have we missed anyone in terms of options? Stubbs we've discussed in the past. Probably in a chase you can back him. Miller we've talked about him as a potential option. Rutherford is an option जहाँ पे अगर आपको लगता है कि महाराज आउट कर लेंगे ऊपर के बैटर्स को, and then Rutherford will get a good time to bat. Then you have Markram that who can bowl against him in Pooran. But again, that is how you have to think, and then pick your players for Grand League accordingly. इसके अलावा, do we have any other option that is something that we have not discussed? No. Samshi Place, you can try. Gudukesh Moti, again, lot of varieties for South Africa for him to target. So that is that in terms of the game and the inputs that I want to share with you guys for this very game. Hopefully you're benefiting. If so, please do leave a like. If not, even then, please. Thank you so much. Baki, we have a few comments which we will definitely take. Hopefully आप सबने video like कर दिया होगा. Karthik Bhai ask, what's the boundary size in Barbados? Sir, depends on the pitch that they're playing on. Comparatively, though, not that shorter, but there are shorter boundaries at times in terms of 65 odd meters. But completely a call that you can take only closer to the game once you know कौन से pitch पे खेल रहे. बाकी video like कर देना sir. बाकी प्रतीक भाई sorry says, भैया favorites क्या है? You expect England to win, and you probably expect South Africa to find a way again. Unless West Indies have Nicholas Pooran doing Nicholas Pooran things. तो आपका कॉल है, आपकी जो गट फील है उसको बैक करो, जैसे मैंने पहले भी कहा है. सुनिए सबकी, करिए खुद की. इवेंचुअली दैट इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर ऑल द वीडियोस दैट वी हैव डन सो फार. 55 you watching. All I'll ask is one like. Thank you so much. Stay subscribed, and lot of content coming up from cricket.com.
इंडिया साउथ अफ्रीका की मैच भी चल रही है, उसका भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। कल फिर हम आ जाएंगे 12 बजे टू डिस्कस द गेम्स एंड देन ऑफ कोर्स वॉच अलोंग फॉर द इंडिया गेम। सो stay tuned to cricket.com. Lot of good content coming up, and I'll see you tomorrow, same place, same time. This is Nikhil Popat signing off. Thank you so much, and have a good day. And let me find the end state. Bye bye.